where we can just showcase a product as well as we can just try to add some value into their trading journey in whichever way possible. Coming to the topic, so topic is about algo trading through RSI strategies. So first, we'll briefly talk about what RSI indicator is and how is it constructed and how can it be used to understand the charts and what's happening in a particular stock and how is it being used by other traders to exploit the price movements and things like that. Secondly, we'll also look at some algo strategies that we have on our platform, and we'll just try to show you how the trades are generated and also how you can, without having any expert knowledge or technical knowledge, even you can participate in this trading trading business because historically it's been like only the smart traders, only the informed traders, only the ones who have a technical expertise used to trade and make money. But that's not the case anymore with the invent and with the way the technological changes are happening. It's very easy and it's very much possible for anybody to trade from anywhere without having to devote and dedicate much of their time. So yeah, allow me to just walk you through what the RSI is basically. So RSI, as the name suggests, it's a relative strength indicator. So it is an indicator developed by Mr. Will Swedder, and it is an indicator developed to help people, to help us understand the trend in the market and also try to give us where the market is standing. Okay, give us a perspective of where the market is standing. So relative strength is nothing but an average. So if you take a period of say 14 days or 14 period on any chart, and if you plot an RSI, what you see is just the number, okay, maybe which will be in the range of 0 to 100. It will never be beyond this range because it's an oscillator which will oscillate between 0 to 100 depending on which way the price moves and how the price moves. So and most of the knowledge of the people is restricted only to this, that once you open a charting software, once you open a charting tool, all you do is select an RSI indicator, define the parameters and in the form of period, and that's it. And then you just try to understand what's happening, and you stake your money on those on this half information that you have. So all you see is the number. Not much effort is being put by most of the people out there to understand how that number is derived, what that number signifies, because the trading rules that are designed are not they are designed in general. But when you're trading, you have to be very strong and very crisp with the fundamentals also with what you're using, because the first most important thing is to know how to use a trading indicator and take a trade. And the second most important, in my opinion, is that how to not wrongly use an indicator to take a trade, because and obviously half knowledge will make that thing happen, will make that thing possible, that you will take a trade which was not a trade. It looked like a trade prima facie, but it wasn't a trade that had to be taken. So in my opinion, it's, even if you're not actively trading, even if you're relying on the algo trading strategies out there, it is very important for you to know some basics of what your money is going to be deployed on, because it's your hard earned money and you are looking to make profit out of it and not loss out of it. So it's very important for you also to understand it. So coming back to RSI, so RSI is an oscillator which oscillates between 0 to 100, means it cannot go beyond this average, beyond this range. And that is what makes it more usable, because it has a clear explanatory power. So if something which has no upper bound or lower bound will not make more sense, because you will not be able to quantify and decide whether the trend is, or whether, so how, so it's very difficult for you to quantify, and it's very difficult for you to understand and realize how to trade this particular thing. So that is that is the first advantage of using RSI, that it's a quantifiable, and it's a range bound, and it's bounded by upper and lower limit. Second is it's also easy to understand and interpret, and since it has been in use for last 40 it has been in use for last 40 years, it's been validated by
various traders across various time frames, across various segments, and it has tested the time. It is in use, and you'll see if anybody, if you've seen any, if you've read any blogs, if you've seen any video, if you've seen any webinar, most of the traders, most of the, even if you just walk past any trading room of any trader, you'll see that you'll have a screen where, or you'll have a part where RSI has been plotted. So it is widely used by novice traders as well as experienced traders, which validates that it is acceptable by all, it is understood by all, and we are on same page as far as its efficiency and importance is concerned. Okay. Now I will also I can go on talking about RSI endlessly, but I will, as a first, I will try to, as I told you, that people mostly just look at the number and not how the number is derived. Let me just show you an Excel sheet where we have tried to where I've tried to come out with the derivation of that RSI figure. Okay, that how is the RSI calculated, and it's very easy to calculate. Even you can calculate it on your, if you have a basic working knowledge of Excel, even you can do it, and then you can just confirm, and then you can play around with the parameters in case you want to do it. Okay, all this is obviously, once we go forward in the webinar, you'll see that all these are just to know certain things. You'll see that all this can be easily taken care by the system, and or you don't have to do it, but understanding is very important as far as risking your money is concerned. So allow me a minute. So this I've taken, so these are the Nifty prices for last 1 year from 10th December 2021 to, let me just expand this. Yeah, from 10th December 2021 to 9th December 2022, that is yesterday. Okay, so let's first understand the components of this Excel sheet, and then I'll show you how Deepesh, yeah. Okay, I'm sorry sorry, to interrupt I here. have not shared my screen, Can right? you- I have not shared my screen, right? Yes, yes. Is it visible now? I'm so sorry. Hello. Yeah, is it visible now? Yes, it is now. Yeah. Yeah, thanks a lot. Yeah, yeah. So if you see, we've taken a 1 year data of Nifty 50 index, Nifty spot index from 10th December 21 to 9th December 2022. That is still yesterday. Okay. Now let us just try to understand this table. So there are two inputs. Okay, that's the date and the time, and the close price. But only this two information is needed to calculate an RSI indicator, and you will see how the indicator is so powerful to just come up with the buy and sell signals, or just come up with the trend in the market by using just the close prices of the underlying. Now, what we try to do over here is, first we try to calculate the change in the price between two periods. So these are the daily values, this is a daily chart, and these are the daily close. The change is on a daily basis. So if you see, it's just the latest price minus latest close minus the previous close. Okay, that's it. That's the change that we calculate. Now we have to calculate. So remember, the formula of RSI is such that you have to first calculate the relative strength, and relative strength is such that the average of all the gains in a period divided by average of all the losses in the period. Okay. So now, in order to have the average of all the gains, we have to come up with the gains in the last 14 period. So if you see, there were 7 times in the last 14 days when the price was closed above the previous close price, and we've taken only those prices. Whenever the price was closed below the previous close, we've ignored it and we've taken value as 0. And similarly, while calculating the loss, we've considered the loss in absolute terms, and we've ignored when there was a profit, and we've taken as 0. Now we take an individual average of the gains and the losses, and the ratio of average of gain and average of loss will give us RSI. Now, if you see this RSI, this relative strength is not is not it's not looking that good. It's not giving us any indicator as to what this means.
and it is therefore pertinent for us to convert this into something which can be easily read and interpreted. And that is how this RSI formula is calculated, which just standardizes this number, and it just try to uh, interpolate, and it's trying to just show us that what would have happened if there were only 100 numbers. So where would have this been, this lie? Where would this lie? So that is how this RSI is calculated. It's a very simple formula. I will just I'll try to share this Excel so that even you can just uh, incorporate the prices, and you can start calculating the RSI on your own without having any advanced knowledge. Yeah. So this is how the RSI is calculated. Okay, it's just calculated. I'll just at the sound of at the risk of sounding repetitive, I'll still repeat that it's just calculated with the close prices. So now let's try uh, and see how these values are uh, yeah, how these values look on the chart. Okay. So now if you see the RSI, so the yesterday's RSI was 55.71. Okay, yesterday's 14 period RSI was 55.71, which is exactly the case over here. Okay, previous RSI was 55.71. Now we've understood how to calculate the RSI, and we've realized that now we are as equipped as this charting softwares and charting tools which help us calculate the RSI. So now we are not at their mercy. We can calculate the RSI for whichever period we want to. All we have to do is just have the prices, the recent prices. Now let's try to understand some of the trends over here. Okay, so what can be in the what can be interpret from this trend? This, mind you, this is the day chart, and these are the long term trends. We will soon be diving. So when we look at the strategies, we'll be looking at a 5-minute, 15-minute, and 10-minute chart, depending on the strategies that we've taken. But this is just to understand the concept of RSI, because in the longer run, it becomes easy for us to understand the concepts. So here you see, so since I told you that the RSI is bounded by zero, is bounded between 0 and 100, which gives us 50 as the midpoint. And 50 is also a very key point as far as RSI is concerned, because that is what shows the equilibrium of the market. So if there is a 50, if the RSI is 50, then the correct way of interpreting is not it's not just, so you don't stop at when you see RSI is 50. It should ring in your mind that since the RSI is 50, it means that our market is at equilibrium, and the average of profits, average of gains is equal to average of losses, and that is why the RSI level is 50. So now if you take the close prices of this for last 14 candles, you realize that the average of all this will be equal to 40. Now if we take, so this point is 17th October. Okay, here the RSI is almost 50.87. Let's just go into our sheet and just try to see what's happening there. So here the RSI is 50.87, and here is also, it should be around the same 50.87. And here you see the average gain is 75, and average loss is also around 75. It's not exact 50, but it's almost close to 50. So here we can say that here the market is equilibrium, and then the other, and the step ahead is to um just be prepared for any side of the breakout. So it can either go above from here or below from here, and that can then become your potential breakout over here. So here the prices have gone up, and hence it was a positive trade, and it's still trending. Here if you see, the price has gone below 50. Here it was at dot 50 on 22nd September, and after that the prices fell down, and hence we got a very brief down move, but it ensured that the RSI was taken to 30 level. Okay, yeah. So this is how you can plan. You can try to interpret RSI on different time frames, and you can define your position sizing and everything depending on what chart frame you are trading and what is your risk appetite and reward to risk ratio. But again, final point before I move on, that this chart has been this indicator has been in business for last 40 years or more than that.
and it is still being widely used, and there is no reason whatsoever for this to be discontinued, and this can become your important tool in identifying a good breakout trends in your trading journey. One more level which I would like to one more data point which I would like to highlight here is, since I told you that at the RSI of 50, the average of up move and down move is 1 is to 1, is in the ratio of 1 is to 1. Now, if you see, now if the ratio increases to 2 is to 1, okay, if the average, so we are in an uptrend where the average of up moves is 2 times the average of down move, okay, then the RSI will be 67. If it is 3 is to 1, then RSI is 75, and if it is 4 is to 1, RSI is 80. So this is how you should be interpreting all these levels. So looking at 50, you should think that okay, RSI market is at equilibrium, and we have a 1 is to 1 1 is to 1 ratio. If it's 67, then you should think that okay, the bulls are outperforming bears by 1, or something like that. Something should come to your mind that okay, the market is bullish, the up moves are bigger than down moves by 2 is to 1, and accordingly ठीक है. Now, so ऐसे करके now I'll also try to show you कि इसको भी कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. अभी तो हम खाली समझना सीख रहे हैं कि how RSI is calculated, how it can be interpreted. इसको और डिटेल में हम देखेंगे तो ये डाउनसाइड है. अगर हम यहाँ पे डाउनसाइड में देखेंगे तो यहाँ पे 50 है, 33 है डाउनसाइड, मतलब नेगेटिव जो रिटर्न्स है, दैट इज द रेशियो ऑफ 2 is to 1 अप मूव के. ठीक है, मतलब हमारा डाउन मूव जो है अभी वो हमारे अप मूव से ज्यादा है, तो हमें 33 का RSI मिलता है, 25 का मिलता है. एक पेक्यूलर चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब 1 is to 1 से जब 2 is to 1 मार्केट जाता है, ठीक है, तो हमारा RSI का मूवमेंट होता है 17 पॉइंट्स का. ठीक है, अभी जब 2 is to 1 से 3 is to 1 पे जाता है मार्केट तो RSI का मूव होता है 8 पॉइंट्स का, एंड जब 4 is to 1 पे जाता है तो RSI सिर्फ 5 पॉइंट से बढ़ता है. सो फ्रॉम 75 to 80, इवन इफ आपका जो गैप है वो इक्वल उससे बढ़ रहा है, it's still not converting itself into a bigger RSI move. तो इसका एक ये भी इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जब RSI 40 और 60 के बीच में होता है तो RSI का जो मूवमेंट होता है दैट्स मच फास्टर एज कम्पेयर टू जितना वो अपने 50 के मीन से दूर जाता है. इसका मतलब ये है कि हमें अगर हमारे ट्रेड्स को अगर करना है और हमें अगर RSI के बेस पे लेना है कि RSI का मूवमेंट पे हम एंट्री या एग्जिट लेंगे, तो उसके लिए 40 to 60 पॉइंट्स का जो गैप है वो सबसे बढ़िया और सबसे बेटर होता है. इसका दूसरा कोरोलरी ये है कि एक बार RSI जब 80 के ऊपर जाता है या यहाँ पे 20 के नीचे जाता है तो RSI में फिर आप अज्यूम कर सकते हो, इट्स सेफ टू कंक्लूड के अभी यहाँ से मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है, बिकॉज RSI का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कम हो चुका है, बिकॉज RSI ऑलरेडी अप मूव ऑलरेडी अपने डाउन मूव से 4 is to 1 में ट्रेड कर रहा है. मतलब हमारा और इससे ज्यादा मार्केट ने कभी देखा नहीं, इसलिए आप भी कभी कोई चार्ट खोलोगे भी, कभी आपने भी खोला होगा, जैसे ये पॉइंट था 18 अगस्त का पॉइंट. यहाँ पे RSI 83 पे गया, सिर्फ 2 कैंडल 2-3 दिन तक RSI 80-85 के अराउंड था, उसके बाद सीधा नीचे फॉल आया. और ये यहाँ पे भी आपका एंट्री टारगेट कर सकते हो कि अभी मार्केट बढ़ गया है. ये जरूरी नहीं है, दिस आर नॉट ऑल दिस रूल्स, ये सब जो रूल्स बता रहे हैं ये खाली एस्टिमेशन है, एजम्पशन है, चार्ट्स के ऊपर देख के. आपको ये सब कंक्लूजन लाने के लिए अपने आप से भी आपको हो सके उतने चार्ट्स आपको देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, तब जाके आपको समझेगा कि इसमें ये जो सारी चीजें हैं वो क्या टाइम के लिए और कितना ये होल्ड करती है और क्या प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज का. अभी हम सो यस, सो आई थिंक इतना इतना इंफॉर्मेशन भी बहुत काफी है टू अंडरस्टैंड एंड टू इंटरप्रेट द
interpret RSI and try to and start using it in your आपके ट्रेडिंग के जर्नी में। अभी मैंने आपको इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताया। 50, अगर 50 का RSI है तो वो इक्विलिब्रियम पे है। 67-75 है तो बुलिश है, 33-25 है तो बैरिश है। तो या तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि 75 के अगर ऊपर जाता है तो हम शॉर्ट करें और 25 के नीचे आता है तो बाई करें। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करें और 60 के ऊपर जाता है तो बाई करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू ट्रेड द RSI। एज मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपको ये नॉलेज खाली आपके लिए है, इसका आपको यूज कर नहीं करना है, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है जो आपके लिए सारा ये कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर लेगी, और आपका जो ऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑर्डर प्लेसमेंट है, वो भी आपकी ब्रोकिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। आपको खाली स्टार्ट करना है स्ट्रैटेजीज। ये बताने का मतलब ये है, इसका इंटेंशन ये है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा गाइडेंस मिले, और आपको और ये नॉलेज आपका बेस बढ़े, दैट्स इट। अभी मैं क्विकली हमारे प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजीज पे आ जाता हूँ। जो आपने हमारा प्लेटफॉर्म अगर एक्सप्लोर किया होगा तो हमारा प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? रिटेल, प्रीमियम एंड HNI। तो रिटेल स्ट्रैटेजीज हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये सारी कैश और उसमें है। अभी हम दीपेश, सॉरी टू इंटरप्ट, या आपका स्क्रीन जो है वो एक्सेल पे ही अभी है शायद से। कैन यू लाइक शेयर फुल स्क्रीन? यस 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 यस, अल्गो, राइट, अल्गो मतलब प्लेटफॉर्म का भी मिल पाएगा। यस 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 यस, सॉरी। अब दिख रही है एल्गो बुल्स का प्लेटफॉर्म? यस। यस यस, यस। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे हम मार्केट प्लेस में जाके रिटेल मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो आपको स्ट्रैटेजीज ठीक लगती है वो आप इसको देख सकते हो। मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज खोल के रखे हैं यहाँ पे, जिसका मैं एक एक ट्रेड सबका दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि प्लेटफॉर्म पे और कौन से टाइप की स्ट्रैटेजीज है, फिर हम ये स्ट्रैटेजीज के ट्रेड्स पे आ जाएंगे। सो जैसा ये रिटेल है, रिटेल में मोस्टली कैश, फ्यूचर्स और नेचुरल गैस और कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे। आप जाके कोई भी स्ट्रैटेजी खोल सकते हो और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस वगैरह आपको सामने सामने दिख जाएगा। रिस्क और कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, क्या क्वांटिटी से स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की हुई है, वो सारा आपको एक बर्ड्स आई व्यू में दिख जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ स्टैट्स देने की भी कोशिश की है, जहाँ पे आपको और इन्फॉर्म डिसीजन मिलेगा कि आपको कितना मिनिमम गेन हो सकता है, कितना मैक्सिमम गेन हो सकता है, कितना एवरेज गेन और एवरेज लॉस हो सकता है। ये सब आप जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, और सब स्ट्रैटेजीज के लिए दिया हुआ है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी इसमें कितना बेटर आपके हिसाब से है। अगर मैं प्रीमियम सेगमेंट को एक्सप्लोर करूँ तो प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी ऑप्शंस, बाइंग, सेलिंग और मल्टी लेग की स्ट्रैटेजीज है। इसमें हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हमारे दूसरे स्ट्रैटेजिस्ट से भी है, और एल्गो बुल्स की इन हाउस स्ट्रैटेजीज भी है। आप इसको इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी आप जैसे खोलोगे इसमें भी वही सेम डिटेल्स है जो मैंने रिटेल में बताई आपको, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको भी इवेल्युएट कर सकते हो HNI एंड प्रीमियम मार्केट प्लेस में भी। अभी हम वापस आते हैं रिटेल मार्केट प्लेस में। जस्ट अ मिनट। सो सो पहला हम ये स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी का कोड है STAB 275, एंड ये GNFC इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। यहाँ पे इसमें 3 टाइप के इंडिकेटर्स इन्वॉल्व है। एक MACD है, एक RSI है और एक स्टोकेस्टिक है, ठीक है? इसमें RSI का जो रोल है, RSI का रोल है वो इसमें एक ट्रेंड को कंफर्म करने का रोल है, रादर देन स्टैंड अलोन इंडिकेटर। यहाँ पे हमने ये तीनों इंडिकेटर्स, इसमें स्टोकेस्टिक और MACD मोमेंटम इंडिकेटर है, और स्टोकेस्टिक एंड RSI ऑसिलेटर्स है। वो हमें यहाँ पे जब ये तीनों के बेस पे हमें जब एंट्री मिलती है तभी हम एक ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम ये रिसेंट यहाँ पे ट्रेड देखें GNFC का, 10 बजे 9 दिसंबर को 10 बजे यहाँ पे हमने एक सेल ट्रेड लिया था।
तो ये से हमने एज ए हमारे सिस्टम ने सेल ट्रेड लिया था, ये सीधा सीधा ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूशन हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली 9:45, मतलब 10 बजे ये एग्जैक्टली यहाँ पे सेल ट्रेड आया था हमें। और यहाँ से फिर आप देखोगे तो हमने ये पूरा मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड है, ये 3:15 को जाके मार्केट पे एग्जिट हो गया, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड था, तो एंड ऑफ मार्केट पे ये एग्जिट हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सॉरी, जस्ट अलाउ मी मिनट। या या तो ठीक है। तो ये जीएनएफसी का जो कल का ट्रेड आया था, तो इसमें एक पिक्युलरिटी ये भी है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी ट्रेड्स लिए जाते हैं वो एवरीडे यहाँ पे आके आपको वैलिडेशन के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ से, एक तो आपने अगर ये स्ट्रैटेजी चलाई है तो आप आपके ट्रेड्स भी कंफर्म कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। और इनकेस आपको अगर देखना हो कि स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है, कैसे ट्रेड्स ले रही है, तो आप यहाँ पे जाके अपना चार्ट लगा के आप देख भी सकते हो कि स्ट्रैटेजी ने कब कौन सा लिया है। खाली आपके सूटेबिलिटी देखने के लिए कि स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। ये सारी स्ट्रैटेजीज और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इटरेटिव प्रोसेस से आते हैं, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम रहता है, इनफेक्ट ना बराबर होता है। इसमें जो भी पैरामीटर्स वगैरह हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स सिस्टम जनरेटेड है। मैकडी एन 922 9, RSI 14, स्टोकेस्टिक 139, ये सारे आप देखोगे तो MACD का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उससे अलग है। बिकॉज हमारे सिस्टम से हमें ये इनपुट मिला है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हिस्टोरिकली ये कॉम्बिनेशन ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू जो इसका स्टैंडर्ड स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक वर्जन है। और इसी तरह से सारी स्ट्रैटेजीज का एक वो रन होता है, ड्राई रन होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन, हम इंडिकेटर तो सिलेक्ट कर लेते हैं, हम लॉजिक भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन हमने इनफैक्ट जिसने भी लास्ट जो भी मार्केट को ट्रैक करता है उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि ये सारे जो इंडिकेटर्स है ये बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे है। बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हर टाइम पे ये वैसे ही परफॉर्म करे जैसे करते आ रहे हैं। कोई स्टॉक अपनी अलग जर्नी में होता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पैरामीटर्स भी चेंज करना जरूरी है, और उसकी वजह से उन्होंने ये एडिटेबल भी देते हैं हमें कि दिस इज बाउंड टू चेंज एंड वी हैव टू कीप इटरेटिंग इट whenever we trade or whenever there is a shift in trend वगैरह etc. Just a minute. Yes. तो ऐसा है, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ट्रेड्स लेना कोई भी मैन्युअल के लिए थोड़ा हेक्टिक भी हो सकता है, और इतना इजीली भी नहीं है। और अगर ये चीज़ अगर हमें ऐसा कोई सिस्टम ड्रिवन, सिस्टम जनरेटेड तरीके से मिल रही है, तो इसमें आई थिंक हमें हमारा समय भी नहीं डालना चाहिए, और हमें हमारी बेटर बेटर जो जिसमें हम बेटर है वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ट्रेड्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स का पावर को कंबाइन करके, जो अपने आप में एक बहुत कंफर्मिंग चीज़ है। और इसके लिए यही चीज़ इसकी यूएसपी है कि इसमें आपको मैन्यू ये सारा चीज़, आपको ये सारा पावर, चार्ट्स का पावर, इंडिकेटर्स का पावर, सब चीज़ें जो है वो आपको वन क्लिक ऑफ अ बटन पे मिल जाती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिफाइन योर पोजीशन साइजिंग एंड आपका जो कैपिटल है उसको उसको इंश्योर करना है। अभी हम एक आध स्ट्रैटेजीज और देख लेते हैं, जैसे एक आध ट्रिक्स और देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर आइडिया आ जाए कि और क्या क्या टाइप के इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज हम और लॉजिक्स यूज होते हैं स्ट्रैटेजी में। ये हमारी एक्सिस बैंक की स्ट्रैटेजी है, जो जिसमें भी सिमिलर RSI MACD, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स अलग है। ये MACD का जो पैरामीटर है ये 12 23 9 है, RSI स्टैंडर्ड 14 है, स्टोकेस्टिक 139 है।
तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम से हमें इनपुट मिला है कि ये जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक पे 1223 बेटर चला है अब तक एज कम्पेयर टू इसका जो स्टैंडर्ड रहा, स्टैंडर्ड एमएसीडी का जो रहता है वो। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेड ट्रेड फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर्स से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम दूसरा एक स्ट्रैटेजी हिंडाल्को पे है, ये मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ये 3 ट्रेड्स लिए हुए थे कल। मैं आपको यहाँ पे 9 9 दिसंबर को 10:30, 12:30 और 2:15 के 3 ट्रेड्स लिए हुए थे। तो ये 9:30 का ट्रेड है, जैसे ही प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे आया, हमारा सिस्टम ने इसको सेल मार्क करके एंट्री ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे एंट्री बाय हो गई, यहाँ पे सेल हो गई। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कई बारी यहाँ पे सिस्टम ने मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ये किया है, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है। बट नंदरलेस यहाँ पे हमने सिस्टम जस्ट इग्नोर्ड ऑल दिस फेक ट्रेड्स एंड फेक सिग्नल्स, एंड जो क्लियर कट सिग्नल है वी ट्राइड टू स्टिक टू दैट ओनली, एंड वी ensured that जो भी हो, हमें फॉल्स ट्रेड्स नहीं लेने, और जो क्लियर कट जिसमें हमें ब्रेकआउट मिलता है वही ट्रेड्स हम ले। तो यहाँ पे भी हमने बाय किया, वो रिवर्स हो गया बिकॉज इट द ट्रेंड डिडंट होल्ड, एंड अगेन वी टुक अ सेल ट्रेड, और वो सेल ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ये की लास्ट स्ट्रेटेजी है डिस्प्ले पर्पस के लिए। ये स्ट्रेटेजी सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे भी मल्टीपल इंडिकेटर्स है, यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स है कि जिसमें सुपर ट्रेंड भी है, जिसमें आरएसआई भी है, और जिसमें मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पे भी मल्टीपल इंडिकेटर्स का पावर यूज करके एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया है जहाँ पे हमें जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसको हम बोलते हैं वैसे ट्रेड्स ही लिए जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेलिंग लिया है, यहाँ पे सेल किया है विच हैज इवेंचुअली डन वेल फॉर अस, एंड हम इसमें एग्जिट भी हमने ले लिया, और वापस यहाँ पे सेल ट्रेड जनरेट हुआ तो वापस हमने वो चीज को वी टुक दिस सेल ट्रेड। सो ये एक ट्रेड या दो ट्रेड से इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, वी है आज जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है देव गॉन थ्रू टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ले मैन, और दैट इज नॉट पॉसिबल, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज हम हमारा वी हैव अ बिजनेस, वी हैव अ जॉब, हमारे पास हमारे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें हम ज्यादा अच्छे हैं, जो हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो और ये सारी चीज जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स का फोटे था, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स का जो वो फोर्ट्रेस था, उसको एल्गो ट्रेडिंग कई एक तरह से ब्रीच कर रहा है कि जो एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं आज वही अभी सिस्टम भी जनरेट करके वो सेम टाइप का अल्फा जनरेट हो रहा है सिस्टम। सो ये एक अच्छा ट्रेंड भी है, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है, बिकॉज कई लोग अगर फंड लेके है और जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसका चार्ज भी ज्यादा करते हैं वगैरह वगैरह। ये आपको मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे आपको खाली सब्सक्राइब करना है, लाइक एनी अदर सब्सक्रिप्शन। अभी आजकल तो सारा चीज सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक वन मोर सब्सक्रिप्शन एंड जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग। और मार्केट्स आर नाइस, मार्केट्स आर वॉलेटाइल, रोज कई अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट में। तो ट्रेडिंग आप कभी भी इसका एडवांटेज और बेनिफिट ले सकते हो। नाउ आई थिंक वी हैव सम टाइम, तो मैं आपको और भी कुछ। पहली बात तो आई थिंक धनंजय भाई, Yes. yeah, yeah, so I think I have covered most of the part that was okay scheduled. So either you can just chip in with something, or we can open for questions or something, and then we can just wind it up Yes, so you have on that. covered
every part, so we can open the platform for Q&A. So please, everyone, type your question in Q&A section, and we can answer them. Uh, we had actually had few questions before only, Dipesh. Yeah. Um, so first one was, can you please shed a light on, like, few people have raised concern about the platform and everything about its like, you can you shed light, like, if it's the legalities and everything, it's there proper, everything is there. Like, they are worried that the platform is in gray area and everything. It's not true, but then also if you shed some light, it just increases the confidence of all the attendees. No, no. So yeah, I think it's a good question because uh, uh, yeah, if anybody has such a doubt, we are bound to just correct it, and so there are lots. So let me just start by saying that lots of misconceptions out there as far as algo trading is concerned. So from legality point of view, it's very much legal. It's very much out there, and there is no doubt about it. It's still a growing it's still something which is growing and which is taking some traction. So it is here to stay. First of all, there is nothing wrong. So if you are doing an algo trading, there is nothing wrong. That's the most the right thing that you can do as far as trading is concerned. And if you are not an active trader, so that is there. And from legality standpoint, I don't think there is anything which is stopping us from trading. It's just an automatic form of trading where we are very being very transparent about what we are doing. You can match the trades you want. You have full control over if you want to execute a strategy or not. Strategies are executed only when you press a start button. So all that things are taken care of. So nothing is gray over here. Everything is very transparent, and this is from legality point of view also. It is not. It cannot be challenged. Meanwhile, Dhananjay Bhai can also add some light onto it if he wants to add. Otherwise, Yes, 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 definitely. Thanks, Dipesh. So, recently there was SEBI circular as well regarding algorithm. So we are abided to that as well. So we have respected, and we will be following all the circulars or maybe rules and regulation by SEBI. So nothing to worry. It is all legal. Also, we provide logs as well. Just to show what the system is doing at what time. To all the clients, with all the strategy as well. Also, about when you add your broking account, okay, so none of the credentials are saved at Algo. Why? Because once you click on add broker, okay, and select done broking, okay, so it will take you to done broking broking house website. You need to log in there, and only the token is generated, and which get backs to Algo. So your credentials are also saved to done broking house only. They are not passed on to Algo as well. So it is all legal, it is all safe, okay, so there is nothing to worry about. You can definitely start algo trading through Algo through your done broking house. Thanks, Dhananjay. Thanks, Dipesh, for addressing the concern of users. So we have some few doubts about, like, how should we connect the broker login basically. Can you please shed a light on that as well? If possible, can you show it directly on the screen? uh, yeah, we can do that. We can actually If you find a sample account. Yeah. yes, so Dipesh, if you can just go to broking details. Yeah, So currently we won't be having any sample account, but then definitely we'll tell you how to bind. So if you can, let's just click on add broker and select done, add broker, and select done here, type D. Yes. So if you click on done here and click on next, so it will take you to the done broking house, website, not on Algo. So over here you need to log in with your mobile number and password, and then you need to log in. Once you log in, it will redirect to Algo, and it will say it is successfully added, like that. So there is no, you don't need any API thing or API keys or secret thing. You don't need to buy anything. You just need to simply log in with your done broking credentials. That's it, nothing else. Okay. Yeah. Thanks, Dhananjay. So there's a question that is there a way to limit number of trades in a day? Like, if is there a stop loss how is the stop loss mechanism in the algo bulls? yeah. So
all strategies in Algo bulls, okay, they are unique to each other. So all strategies have different modes of exits. They obviously, without exit, a strategy cannot be very foolproof. So yeah, that is a very good question. And if you see, so suppose if I take the strategy as an example, okay, so there are three ways. So let me just give you a broad view about how can a particular strategy be exited, okay. So first thing is, first after taking any entry, system looks for if there is any predefined stop loss or target level, okay. That is one point of exit where you have given, where you have clearly defined the levels at which you want to exit, at which you want to exit. Second mode of exit is reversal. Suppose you've got into a buy trade, but for some reason before achieving target or stop loss, the reversal happens, as in the trend changes. At that point of time, we will not wait for a stop loss to hit. We will just exit the existing buy position, and enter the sell position. So that is another mode of exit. Third is obviously end of market. If you've entered a trade, if no target or stop loss is achieved, if there is no reversal happening, markets become flat, and the trading time is hit, the end time of the end trading end time is hit, तो आपका वहां पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन, बिकॉज एमआईएस ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं. सो मल्टीपल लेयर्स ऑफ कुशन है यहाँ पे, जहाँ पे आपका पोजीशन कोई भी डायरेक्शन में अगर हे वायर होता भी है तो इट बहुत सारे एग्जिट रूट्स है जहाँ से अपना स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाएगा, एंड आपको लॉस मेकिंग ट्रेड्स को ज्यादा टाइम तक वो नहीं करना पड़ेगा, होल्ड ऑन नहीं करना पड़ेगा. तो और इसमें अगर आप देखो तो आप, ये तो स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स हो गए जो अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है. अगर मैं कोई एक स्ट्रैटेजी चलाता हूँ, ठीक है, तो हमने आपको भी एक कंट्रोल दिया हुआ है स्ट्रैटेजी में, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस पे निकलना है. तो जैसे मैं कोई एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक पीएनएल ट्रैकर का हमारा एक टूल या फीचर है, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर चलो ठीक है आपने 1 लाख रुपीज से ट्रेडिंग किया है, तो आपका जो प्रॉफिट डिजायर्ड है ये पर्टिकुलर ट्रेड पे, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, वो 4,000 का है और रिस्क है वो 1,000 का है. तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे ओवर ऐड कर सकते हो. तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, एडिशनल आपको एक लेयर मिल रहा है डिफाइन करने का. अगर आपको लग रहा है कि एल्गो बुल्स का जो ट्रिगर है वो आपका रिस्क एपेटाइट से ज्यादा है, या फिर उसका जो टारगेट है वो प्रॉफिट डिजायर्ड से ज्यादा है या कम है, तो आप अपने हिसाब से मैन्युअली वो चीज को भी ओवर ऐड कर सकते हो. सो मतलब इसमें स्ट्रैटेजी लेवल पे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जो आप अगर ट्रेड को इवेल्युएट करते हो एक एक ट्रेड को, तो आपको पता चल जाएगा. अगर उसके ओवर एंड अबव भी आपको अगर कोई चाहिए कोई, तो वो भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे एज अ टूल. Yes, I think that's Okay. about it. हाँ, that's so target and stop losses are unique to its strategies, और वो स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन में लेके we have to define. जो कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करेगा तो उन लोग को वहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. यहाँ पे if you go and if you just see the description, यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी है, जिसमें इसमें एक्सप्लिसिटली स्टॉप लॉस या टारगेट ऑर्डर्स का मेंशन नहीं है, उसमें नहीं है स्टॉप लॉस या टारगेट, जो जो रेलिवेंट चीजें सारी यहाँ पे कवर्ड है. Okay. Uh, Thanks, Dipesh. Yeah. Dipesh, we have a question that so can the users actually choose the indicators for the equities, or all these are predefined? No, these are predefined. So indicators are all very predefined. But what a user can do is user can change the configuration, and a user can just go and change the configuration if he thinks that he has better combination. If suppose we have a strategy which works on 15 minutes, okay, this Hindalco strategy works on 15 minutes. तो यहाँ पे 15 minutes के बदले if client wants to trade on a 5-minute indicator, and if he wants to tweak the parameters, that is very much possible. तो पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर से आप अपना स्ट्रैटेजीज बना नहीं सकते. वो सूनर और लेटर वो भी लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पे क्लाइंट्स को मिलेगा, क्लाइंट्स को एक एडवांटेज या एक टूल मिलेगा जहाँ पे क्लाइंट्स अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज बना ले. लेकिन अभी तक उसकी अभी वो है नहीं. और दूसरा चीज ये है कि अभी उसका जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रैटेजीज रखी है ये भी इतनी रिगरस टेस्टिंग करके रखी है. इसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलाए हुए हैं, इसमें इतना हमने केयर रखा है कि एटलीस्ट, क्योंकि ये अल्टीमेटली मार्केट प्लेस पे जाने वाला है और यहाँ पे आके पीपल आर गोना ट्रेड विद दिस. तो
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाइडली टेस्टेड हो और बहुत स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह के बाद इट मेक्स इट वे टू द मार्केट प्लेस। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल वो हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई क्लाइंट अपने हिसाब से अपने पैरामीटर्स और अपने इंडिकेटर से स्ट्रैटेजी चलाता भी है, ऑब्वियसली उसका बेटर या वर्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एक्सपीरियंसेस एंड हाउ ही इज ट्रेडिंग। बट इट वुड बी मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट इज ऑलरेडी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वो एडिशनल एफर्ट जो है वो शायद इतना इंक्रीमेंटल अल्फा शायद जनरेट ना करे एज कम्पेयर टू द स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव ऑन द प्लेटफॉर्म। Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. So few users are also asking about like how they can see the profit and loss ratio of the each strategies, or what's the percentage of success rate and everything. So is Yeah. So it used to be there on the platform. We used to have proper ROIs as to what is the profit of the strategy for a period, what is the loss, and what was the hit ratio as to how many trades, how many profitable trades and loss making trades the system has taken. And a lot of other details were also provided. But since the release of a SEBI circular which mandates us to not show any returns or anything that will give an idea about how the strategy has performed and how the returns is in the back in the in as an historical data point, we cannot show it. So unfortunately we had to bring it down. And now so all we can do is just show the trades and trade related parameters. That's it, as to how many trades are being taken, how many average trades, what is the max PNL and everything. Here you get the graph as to how the so a lot of other things are also provided along with all these mechanisms, but unfortunately we had to bring it down because of the regulation that was introduced by SEBI some time back. Here you get to see how your account has expanded from 100,000 to 500,000, 1 lakh to 5 lakhs in last 2.5 years. So yeah, so what they are asking is specifically not there, but still we have kept enough information for them to take an informed decision. And mm-hmm. if you see this PNL graph, you can make it out that there are two things over here. One is it looks like it's a 50% hit ratio strategy, 50 to 50% hit ratio strategy. And the other part is that the profits are more than the losses. So the green bars are bigger than the red bars. So which Mm-hmm. states which gives us a feeling that the strategy is a 50% hit ratio strategy. Along with it, the risk to reward is also around a 2:1 or 1.75:1 or something like that. So this is how you can just try to read between the lines, but unfortunately we cannot show it explicitly. And okay. Thanks, Dipesh, for clarifying that. Yeah. Dipesh, actually, there's also a question. Like as you mentioned in the beginning, right? There are like different schemes or different strategies for retail, premium, and HNI clients. Yes. Can you like please suggest the difference between them? Like what exactly is the Yeah. difference between all those? Yeah. So first primary difference is that there are a lot of so all these categories are based on the risk appetite of the customers. Okay, risk appetite and capital capacity. Okay. So now retail strategies can be traded with 5 stocks also, 10 stocks also. So there is no minimum capital required over here, and this can be accessed by everybody, short-term trader, small trader as well as the HNI trader. Whereas premium marketplace and HNI marketplace have option strategies. Here we introduce option strategies to our clients, which are obviously very promising also, which provides a good potential profit and everything, but it has a big risk also. So this is to just help our clients who don't have that sort of risk appetite, to keep them away. So we've taken this a conscious call as a part of a social responsibility thing, that we don't want to make clients who are not ready or who are not capable to sustain such losses and drawdowns to venture in, because then this is a very given fact and known fact that option trading is riskier. Uh, and hence and also the expertise, also the level of strategies and level of intelligence the strategies have, that also allows us to have command the premium of this strategy, of this sort of strategies over retail marketplace. Because here we're not just scanning indicators and taking orders. Here we are also determining which strike price to take, and then see what is the better
what is the better exit points for those strategies. तो ये strategies एक तो this is not meant for people who don't have much risk appetite, एंड दूसरा ये है कि इसमें टेक्नोलॉजिकली ये इतना साउंड और एडवांस्ड है कि इसमें जो एफर्ट्स वगैरह जो है और इसमें जो इंडिकेटर्स वगैरह यूज हो रहे हैं और जो बैकग्राउंड में स्कैनिंग हो रहा है वो ज़्यादा हैवी है। तो ये दोनों दोनों फैक्टर है जो ये HNI और प्रीमियम स्ट्रेटेजीज में, प्रीमियम और HNI दोनों में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है। इसमें भी सेटल डिफरेंस ये है कि HNI मार्केट प्लेस में ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिनका रिवॉर्ड कम है लेकिन रिस्क भी कम है। यहाँ पे कोई HNI आता है तो ही इज ऑब्वियसली कंसर्न्ड अबाउट हिज कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन है, कैपिटल एश्योरेंस है, मोस्टली मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज और हेज स्ट्रेटेजीज है। यहाँ पे कोई डायरेक्शनल या नेकेड कॉल या पुट ऐसा कॉल नहीं लिया जाता है, बट स्टिल इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। एंड प्रीमियम में यूल ऑल्सो बाय अ फ्यू ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज, मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज। तो ये सेटल्ड ये डिफरेंस है रिटेल प्रीमियम एंड HNI में। पहला कैपिटल का है, दूसरा रिस्क का है, और तीसरा है द एडवांसमेंट एंड द साउंडनेस ऑफ द स्ट्रेटेजी across all three segments or across all three marketplaces. Yeah, I think that's about it. I think that Yeah. suffices. Thank Yeah. you. Yeah. Thanks, Dipesh. Yeah. Dipesh, can you please share the last question? Actually, can you please let know users about the subscription fees of Algo Bulls and everything? Yeah, I think that Mr. Dhananjay can take it up. Yeah. Yes, so it is already present there, in the plans and I'll wallet. just show Plans it. and wallet. Okay, so we offer multiple plans starting with 1,000 rupees, for equity segment, and the plan goes to 11,000 as well. It depends what user wants. Okay, so they can select, they can go to plans and wallet, they can explore the plans. Okay, we have a couple of free plans for back testing and paper rating, which they can avail and then see how the system is user friendly. Okay, and if they want to build their own strategy, we have developer option, they can use that as well, right? So starting from 1,000 rupees, you can avail any plan. Okay, and if you are subscribing to any monthly plan, okay, there are no extra charges later on for that particular set of strategies. Okay, for example, if you are taking 1,000 rupees plan for equity strategy, so if you run equity strategy for 30 days, there are no hidden charges, no extra charge, no profit sharing, nothing. This is just a subscription based algorithm services. Oh, thanks, Dhananjay. Okay, we think we have almost covered all the questions that is being asked by the attendees. Okay, okay. So Deepesh, thanks a lot for this webinar, and Dhananjay, to you as well for conducting such a insightful webinar. I'm sure that attendees have got to learn a lot of new things, and they'll be taking some actionable insights. For everyone, you can seamlessly place orders on Dhan through the Algo Bulls platform. Do subscribe to their try it out their platform and place orders. And if there is anything, you can feel free to share with us your suggestions and feedback. We'll be coming up with more such webinars in the coming days, and for regular updates and everything, do follow us on our Twitter, Instagram, LinkedIn, everywhere, and also on community.dhan.co. We'll be happy to share all the details as well. Thanks, Dipesh. Thanks, Dhananjay, once again. Looking forward to more such insightful sessions in the coming weeks. Thanks a Sure, lot. thank Thanks you. everyone. Yeah. Thank you everyone for attending. Thank you very much. Bye.